अविनाश जी, आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। लगातार जो एक सपना प्रधानमंत्री ने दिखाया है, अपना घर, यानी कि वो एक सपना साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही तौर पे ऐसे में L&T फाइनेंस, LIC हाउसिंग, इन तरह के स्टॉक्स पर आपका क्या नजरिया रहेगा? कितनी अवधि तक इनको रोक कर रखना चाहिए और क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सलाह देंगे आप इनमें? आई थिंक मोदी जी ने जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, प्लस हाउसिंग के लिए जो उनका विजन है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एक रियलिस्टिक विजन है और मार्केट्स भी इसे थम्स अप देगा। रही बात हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की, तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बाद हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए काफी बड़ा मौका है। इनफैक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग में काफी कंपनीज अभी इंटरेस्ट दिखाएंगी कि इसमें भी फंडिंग करे, और यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस है या GIC हाउसिंग है, ग्रू फाइनेंस है। क्लियरली अगर HDFC की भी बात करें तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली लॉन्गर टर्म के लिए निवेशकों को ये एक सेक्टर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली अगले आने वाले 2-3 साल में उनको अच्छा पैसा बना के देगा, बट आई थिंक क्लियरली थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू रखना जरूरी है। Mr. Gorakssakar, looking at what the Prime Minister said yesterday and these massive schemes and these missions, what kind of a view would you be looking at in terms of the market? Because first of all, there needs to be clarity as to how these projects will actually be implemented, and where the funding is going to come from. So from a point of view for which medium to long term and even in the short term, what would you be advising your investors to do in sectors that are going to be affected by these projects? No, I think clearly, I think from a long-term policy, definitely these measures sound positive. But from the short term, I think, as you rightly mentioned, the funding and the availability of land is going to be a key variable, to make these projects pretty successful on the ground. I would be more comfortable on, as I mentioned earlier, that housing finance is going to be a key variable for driving growth, for these projects. More importantly, quality real estate players also could benefit who operate in the affordable housing segment. Again, a lot of construction companies, water management companies like Wabag. I think clearly there's a host of, ancillary kind of players which could possibly benefit. And I would say that, it's a wait and watch unless policy action now gets converted into ground level action, which may possibly take a couple of quarters. I think that would be a time when one can take a realistic view as to which companies could benefit. But overall, I think the intention of the government is positive, and I think we would definitely like to await more clarity as far as the funding and the availability of land is concerned, which is most important, for the success of these projects. बिल्कुल, ज़मीनी तौर पर किस तरह से काम होता है ये देखने वाली बात होगी। महेश साहब, अगर